Today in this program, a brainstorming session on destructive emotions, how emotions can lead to destruction, and how we can come with a constructive model, how we can creatively work on our emotions. As we have worked on our intelligence, on scientific research and all is going on, but importantly, we need to work on the emotions, how we can work on our emotions to build a peaceful, powerful, and purposeful, meaningful life, a peaceful world order. So we will like to listen from Professor V.C Rajshekaran Pillai, the Honorable Vice Chancellor from Mammalian University. This is welcoming speech and enlightening talk on emotional intelligence. Honorable Professor Munishri Mahendrakumarji, distinguished office bearers and scholars of the Spiritual Technology Research Foundation, my colleague from the Institute of Dharma Studies, Dr. Supriya Rai and Dr. Jain, and other participants who are in this discussion forum today. I'm extremely glad that the Spiritual Technology Research Foundation and the Institute of Dharma Studies and the Department of Jainism under it are effectively coordinating this university STRF interactive discussion meetings in a very systematic way. After our first, this is the third meeting. In effect, this is the third meeting. First original, we have thought about it, and this is the third meeting. And I am seeing the trail mails from the Spiritual Technology Research Foundation and the scholars about the activities. And I'm glad that systematically we are doing it. Of course, I am not an expert in the field, but I know the importance of this particular interaction in understanding spirituality in a scientific and logistic way. That is the overall purpose of this thing. Jainism provides ample examples of such logistic interventions into emotions. Emotions are the most important factors when it comes to the quality and meaning of our existence. It's a mental activity followed by physical expression and actions, and controlling it, getting quality emotions and understanding the reasons behind the emotions, how the emotions can be probably moderated in a sense that the negative psychophysiological actions can be minimized. All these things are activities both in the Western and Eastern philosophy for centuries. Whether it be neuroscience, whether it be biochemical and relation between neurochemistry and physical actions, all these things are the Western thoughts. But if you just look at the Jain philosophy, you will see several explanations of each and every emotion, the reaction, both the positive and negative things. Therefore, it is definitely going to contribute significantly to the behavioral sciences, which is the most important discipline necessary for the existence
of the human being. We are all working for enhancing the quality of life and life management systems. So understanding this is very important. I am glad that the Spiritual Technology Research Forum has a treasure of such knowledge. And it is very important that this treasure of knowledge which is available with the Jainism is effectively shared and communicated to the new generations. And communication to the new generations can happen only through education, higher education, and the universities. And therefore, this interaction is very important. I am extremely glad to be part of it. And we will ensure that these proceedings may be published periodically. We will provide a maximum publicity. We will also involve students in the discussion meetings. Probably in the next meeting onwards, I will request my School of Dharma Studies just to invite students also as participants for these discussion meetings. It's very important. Let me welcome Munishri and all the distinguished scholars from the Spiritual Technology Research Foundation for this very important activity. I will be away for maybe for an hour for an important meeting, but I will join again and I will collect all the information from my colleagues, Dr. Supriya Rai and Dr. Jain, and we will definitely think about the next discussion meeting, which is probably to be scheduled after 15 days or within a month again. Wish the program all success. And on behalf of the Somaiya Vidyabhar University and our Chancellor, Mr. Samir Somaiya, I welcome all of you for this very important interaction. I wish the program all success. Thank you very much. Thanks again to Professor Rajshekaran Pillai, Vice Chancellor, for the enlightening talk, and especially the welcome was welcoming. Because well and come, two words which play an important role in the program. First is wellness that we want to bring, and as Vice Chancellor has informed, that wellness is coming. So with this welcoming, we start with the wellness that is coming to us, and the drive of wellness is from emotional destruction to emotional intelligence. So in this program, we like to listen from the enlightening speakers. First of all, as an introductory remark, I would like to introduce this concept today in front of you all. Prasannatma Hikshu Nayanamavataram Nayatu. All the enlightening, eager, like-minded people, esteemed scholars and scientists present in this program. Today's topic is brainstorming on destructive emotions. Are really emotions destructive or constructive? We need to work on, as the people are working on the physical part, they are going to gym to create their physical power, develop that. There's a boom on emotional intelligence, which is needed. Professor Richard Davidson and Daniel Goleman have worked a lot in the sphere of emotional intelligence. And it is seen that besides the EQ, physical quotient, IQ, intelligence quotient, we need to work upon EQ, that is emotional quotient. Today, we see the joint families are converting into nuclear families. The people are going under depression, and suicidal tendencies are tremendously increasing in our society. What is the reason? Besides having life education, why people are undergoing depression, psychological trauma and all? I think the most important key part is the lack of emotional wisdom, emotional intelligence. And we need to work on this area of emotional intelligence altogether. But how? Why this happens? So the person was very learned, very knowledgeable. Even they are unable to control the emotions of their family.
One of the key reasons is the problem of perspective. In Jain philosophy, the important part is Mohaniya karma. It sees that the karma behind the emotional problems that we undergo is Moha karma or Mohaniya karma. It is seen as the king of the karma. So all the karmas, the leader is Moha karma. So if we are able to, if one is able to win over that Mohaniya karma, he is able to recover the original state of consciousness, enlighten itself, and reach the ultimate aim of pure consciousness, also known as moksha or liberation. So the important part of the spiritual journey is moha karma, and again, working on the emotions also needs to focus on moha karma. This moha karma we need to understand the two counterparts or two branches to it, darshan moha and charitra moha. Darshan moha is related to more of perspective of looking into the thing. And the second one is conduct deluding karma, charitra moha karma, which is the root behind the anger, the pride, the jealousy, the hatred, all the destructive emotions we see. The Jainism says before understanding destructive emotions, we need to understand its root, which lies in this perspective. So today I'm going to discuss on 2 points: problem of perspective, second is problem of possessiveness. Problem of perspective is the drishti. How we have a drishti. Let's introduce this concept with a small anecdote to understand and elaborate upon. Shall I go in Hindi? Let's say there was a family, newly wed family, just 2-3 years of their marriage, and both were very lovingly people. और वो दोनों बहुत अच्छे से जी रहे थे। एक बार की बात, पति किस कार्य से गया हुआ था, उसने एक मेहमान घर में एंट्री कर दी। जैसे घर में एंट्री करता है तो वो पत्नी है, वो देखता है कि मेरे पति के फ्रेंड है, पास्ट फ्रेंड है, अब कई सालों बाद वो मुंबई में आए हैं, आज मिलने के लिए आए तो उनकी आवभगत करती है और उनके लिए टी सर्व करती है। तो वो ये चाय रखती है, कुछ काम स्नैक्स लेने के लिए अंदर रूम में जाती है, उतने में एक जोर से आवाज आती है, वो देखती है क्या हो, देखा उस भाई साहब ने चाय का कप उठा के दीवार पर फेंक दी। उसे लगा ये तो बहुत बुरी बात है, और जैसे जैसे उसका इमोशनल इक्विलिब्रियम अच्छा था, तो जैसे जैसे मन बनाया कुछ गलती हो गई होगी, तो दूसरी बार चाय बना दी। दूसरी बार भी यही हाल, एक दूसरी दीवार पर उसने दे मारा। तीसरी बार जैसे जैसे लेके आती है और सर्व करती है, कुछ काम के लिए अंदर जाती है, उतने में वापस तीसरी बार भी यही हाल। पहले तो पत्नी चंद्रमुखी थी, बहुत पॉजिटिवनेस से भरी हुई थी, मुझे भी 2 घटनाएं हुई तो सूर्यमुखी बन गई, और तीसरी बार जब हुआ अब ज्वालामुखी। It's like a volcanic eruption. Her emotions was totally disturbed. तो वो आती और कहती है, भाई साहब आपको चाय नहीं पीना तो मत लीजिए, आप दूध ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कुछ ना चीजें छोड़ दीजिए। पर इस तरह से ऐसा कारनामा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो उतने में उस भाई ने एक बात कही कि जितनी बार मैडम चाय लेके आते चाय में मक्खी होती, जितनी बार आप चाय लेके आते चाय के अंदर मक्खी होती है, और मुझे आप कुछ ना तो चलेगा, पर चाय में मक्खी डाल के देते हो, इट्स इंटेंशनल इंसल्ट, इट्स एन इंटेंशनल इंसल्ट, इट कैनॉट हैपन फॉर अ टाइम। आप चाय लेकर आप देख रहे हो, और आपने एक बार 2 बार 3 बार ये रिपीट किया, इसे घिनौना अपराध है। बैठने के लिए सोफा पर चाय में मक्खी, ऐसा तो इसे बहुत बुरा है। उस पत्नी ने एक लाइन कही और भाई साहब एकदम लाइन में आ गए। पत्नी ने, वो महिला ने कहा कि आपका चश्मा बदल देता हूँ, और जैसे चश्मा हाथ में लिया, चश्मे में पॉइंट करके चश्मे के नीचे के बॉर्डर पर एक मक्खी, मरी हुई मक्खी चिपकी, पूरा चेंज हो गया पर्सपेक्टिव। वह व्यक्ति जो गुस्से में था, अब वो इमोशन लेस हो गया, एकदम स्टक हो गया,
वो रिवर्बरेट हो गया, उसको रियलाइजेशन हुआ, उसके आंखों में आंसू थे, उसका डीप रियलाइजेशन था कि सारी प्रॉब्लम का रूट कॉज मेरा दृष्टिकोण था, ये प्रॉब्लम मेरी थी और मैंने ये कुछ क्या नहीं कर दिया, इतना बड़ा इंसल्ट कर दिया, इतना ज्यादा इमोशनली वो डिस्टर्ब हो गया और मैंने किसी को समझा ही नहीं। उसकी दृष्टि में एक परिवर्तन आया, तो उसका पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, उसे एक मैसेज मिला तो वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है, उसे समझ में आया कि इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ माय पर्सपेक्टिव। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी घटना में ये देख पाते हैं कि मक्खी चाय में नहीं, पर उसे मक्खी दिख रही थी क्योंकि प्रॉब्लम उसकी क्लास में थी। आज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं फैमिली की हो, कहीं ह्यूमन इमोशंस से रिलेटेड जो सिचुएशन बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी पर्सपेक्टिव में जो प्रॉब्लम नहीं, उसे हमें चेक करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ पर्सपेक्टिव पर हमें वर्क करना है। सिर्फ पर्सपेक्टिव ही याद रखिएगा कि वो हमेशा फॉल्ट दूसरों में ढूंढता है, blaming others, fault finding mechanism. So we need to work on this and enlighten our perspective, looking for an unbiased perspective. अब इसीलिए जैन दर्शन का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन, enlightened world view, enlightening perspective. Let's begin our life with an enlightening perspective of looking into the scenario, looking the consciousness as it is, looking the things as they are, and focusing on the brighter perspective of it can actually help us to work on our emotions. तो इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम बहुत ब्रीफली समझने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिवनेस। प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिवनेस जहां पर वस्तु से ज्यादा उसका महत्व एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसको लेकर भी बहुत इलैबोरेशन किया जा सकता है। एक शॉर्ट स्टोरी से अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। एक मालिक और नौकर एक घर में साथ रहते हैं। नौकर कई सालों से उसके साथ काम कर रहा है और नौकर के हाथ से उनकी एक प्यारी घड़ी जो एंशिएंट हेरिटेज की थी, ऐसी नहीं थी, बहुत पुरानी 300 years बैक, 3 centuries पुरानी एक एंटिक मॉडल थी, और नौकर सफाई के दौरान कुछ गलती हुई और वो गिर गई, गिरी, घड़ी टूट गई। और घड़ी टूटने पर मालिक को बड़ा गुस्सा आया, यार घड़ी 300 साल पुरानी, पीढ़ियों की एक निशानी से तुम्हें तोड़ दी। उस नौकर ने क्या कहा, सर आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हो, रोज इतने लोग मर जाते हैं, इतने लोग खत्म हो जाते हैं, अब एक घड़ी के लिए ये तो अजीब है। इसने बोला बात तो बिल्कुल सही है, पर ये तो यार उल्टा कर रहा है, एक तो घड़ी इसने गिराई और मेरे को सुना रहा है। और रात का सीन पूरा दिन बीतता है एक रिग्रेट के साथ, वो बड़ा डिस्टर्ब है इमोशनली, और रात भर सेठ को नींद नहीं आती, और नौकर को नींद एक मिनट भी रुकी नहीं है, वो मस्ती की नींद है। तो मालिक की नींद हराम है और नौकर को पूरा आराम है। तो मालिक ने सोचा कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, गलती ये कर रहा है, नींद मेरी डिस्टर्ब हो रही, तो प्रॉब्लम का व्हाट इज द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसने एक आइडिया लगाया, अगले दिन सुबह ऐसा कुछ किया कि अब मालिक को चैन की नींद आ रही है और नौकर की नींद टूट गई। उसने क्या किया हम गेस कर सकते हैं, उसने छोटा सा काम किया, उसने नौकर से इतना सा कहा अगले दिन, अरे तूने जो घड़ी तोड़ दी, 3 दिन बाद तेरा बर्थडे आ रहा है, वो घड़ी तेरी थी, तुझे मैं गिफ्ट देने वाला, ये घड़ी तो तेरी ही थी। जैसे उसने सुना उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उसकी पूरी लाइफ का मॉडल चेंज हो गया। उसे लग रहा है कि मेरी घड़ी थी, मुझे वो एंटीक घड़ी जिसका आज का वैल्यू इट इज मोर देन 10 लाख बिकॉज ऑफ द एंटीक्विटी, तो वो चीज टूट गई, वो पॉजिटिवनेस जैसे जुड़ी, अब सीन चेंज हो चुका है, नौकर की नींद हराम है, सेठ जी को पूरा आराम है। तो अब ये देखना है कि सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, इस स्टोरी में प्रॉब्लम कौन था, इसका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस का रूट कौन था, या घड़ी का टूटना या घड़ी का प्रोजेक्शन होना। तो हम देखते हैं स्टोरी के अंदर कि घड़ी की पॉजिटिवनेस प्रॉब्लम है, घड़ी होना टूटना ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम पॉजिटिवनेस को ब्रेक कर पाते हैं, हम स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम ऑफ पर्सपेक्टिव को और प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिवनेस पर अगर कुछ वर्क कर पाते हैं,
इमोशंस को बैलेंस करने की दिशा में एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप ले सकते हो। इन सब के बारे में एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट के साथ हम आगे के इस प्रोग्राम में जान पाएंगे। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अब मेरा विनम्र अनुरोध मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जो बताएंगे हमें मुक्ति का मार्ग। एक प्रसिद्ध सूत्र है, कषाय मुक्ति के मुक्ति रेव। कषाय मुक्ति ही मुक्ति है। डिस्ट्रक्टिव इमोशन से फ्री होना ही एक्चुअल फ्रीडम है। वो ट्रू फ्रीडम कैसे हम कर सकते हैं और उस पर की नोट की मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे एनलाइटनिंग एमिनेंट और आगम मनीषी प्रोफेसर मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जिनके बारे में परिचय की ज्यादा जरूरत नहीं, जो 17 लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हैं, जो जैन फिलॉसफी एंड साइंस ब्लेंडिंग पर जिन्होंने मल्टीपल वर्क्स लिखे हैं, जिनकी एक बुक एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रिलीज करते हुए कहा कि आफ्टर रीडिंग दिस बुक I come to a conclusion that he is not just a religionist, a spiritualist, but a true philosopher and a true scientist. As a scientific cum philosopher, Professor Munishri Mahendrakumarji स्वामी से मेरा विनम्र अनुरोध कि let's kindly enlighten us on the topic destructive emotions and how to get rid of them. संदेशु निर्मलयरा आयतेषु अह्यं पयाशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक गण, विद्वद्गण, विद्यार्थीगण एवं अन्य सभी तत्वानुरागी बहनों और भाइयों, आज हमारी यह राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका समायोजन सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय कर रहा है, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजशेखरन पिल्ले के स्वागत भाषण को हम सबने सुना। यह स्पष्ट हो रहा है कि आज भारत में इतने इतने विश्वविद्यालय है, लेकिन सोमैया विश्वविद्यालय ने यह जो एक नया कदम उठाया है कि हम कैसे हमारे प्राचीन दर्शन, अध्यात्म और धर्म के उन तत्वों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में परखने की कोशिश करें, और इसी का यह नतीजा है कि आज केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज, जिनकी डायरेक्टर सुप्रिया राय यहाँ पर है, प्रोफेसर एस.पी. जैन वहां पर जैन दर्शन पढ़ाते हैं, और अनेक वहां की जो फैकल्टी स्टूडेंट भी मेरा ख्याल है इसमें रुचि ले रहे हैं। ये सब इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि एक विश्वविद्यालय में एक अभिनव प्रयास शुरू हुआ है। आज के इस नितांत मटीरियलिस्टिक जो युग है, जहाँ सारा प्रवाह, सारी धारा केवल भौतिकवाद एवं एक्सटर्नलिस्ट बहिर्मुखता की तरफ है, वहाँ इस प्रकार का एक कदम एकेडमिक स्तर पर करना, यहाँ पर हम किसी श्रद्धा, किसी धार्मिक मान्यता आदि के आधार पर एकत्रित नहीं हुए। हमें विश्वास है कि सत्य का जो प्रतिपादन आज वैज्ञानिक करने जा रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी पद्धति से। वहां प्राचीन भारत में योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, अध्यात्म के साधकों ने
अपनी अपनी साधना के द्वारा सत्य को पाने की कोशिश की और उन्होंने जो कुछ पाया, जैसे समझा वैसे उन्होंने हमें बताया, जो हमारे भारतवर्ष की एक धरोहर है, our legacy, our heritage, the spiritual treasure and spiritual knowledge, which I call spiritual technology and spiritual science. ये हमें देखना है कि वास्तव में ये स्पिरिचुअल ट्रेजर जो है, उसको अगर हम आज की हमारे पास जो कसौटी है ऑन द एनविल ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, उसके द्वारा हमें पक्षपात रहित होकर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर देखना है कि यह सत्य की खोज जो हमारे यहाँ हुई थी, वो सत्य की दिशा में हमें कहाँ तक ले जा रही है। इतना ही नहीं, हमारा जो वर्तमान जीवन है, व्यक्ति का जीवन है और पूरे विश्व की मानव जाति का जीवन है, उसमें कौन सी वो समस्या है जो आज व्यक्ति को भी पीड़ित कर रही है और पूरी मानव जाति को पीड़ित कर रही है। आज विज्ञान ने अपने साधनों के द्वारा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी उनके अवदान मिले मानव जाति को अनेक प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने की दिशा में व्यक्तिशा और मानव जाति बहुत आगे बढ़े। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इन बाह्य भौतिक साधनों के द्वारा हम अपनी वैयक्तिक जीवन को, जिंदगी को और सामूहिक रूप से पूरी ग्लोबल ह्यूमन लाइफ को समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं? क्या हम उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं जो आज एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को, एक एक समाज को, एक एक राष्ट्र को और पूरी मानव जाति को ग्रस्त कर रही है, पस्त कर रही है, परेशान कर रही है, बल्कि अनेकानेक भौतिक सुविधाओं के साधन के बावजूद भी आज मानव की अंतरात्मा रो रही, पीड़ित है। और उसका मूल कारण, जैसा तीर्थंकरों ने बताया, अरहतों ने बताया और उन अध्यात्म के शिखर पुरुषों ने बताया, मूल कारण भीतर में, आदमी के भीतर चेतना है। आदमी केवल ये ह्यूमन बॉडी नहीं है, केवल ये ह्यूमन ब्रेन का एक मैकेनिज्म नहीं है, ये तो एक केवल एपरेटस है। उसको जो चलाने वाली एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियस चेतना है, उसका एक अस्तित्व है, एक रियल एग्जिस्टेंस, एज रियल एज द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। एटम, परमाणु, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये एक चीज है, एग्जिस्टेंस है, एक रियलिटी है। उसी प्रकार से आत्मा, जीव, चेतना से युक्त एक ऐसा तत्व, वास्तविक पदार्थ है। और उसी के जो पहलू है, पक्ष है, उसी के जो अनेक पर्याय हैं, जिसे पर्याय का, वे ही हमारे जीवन को समस्याग्रस्त कर रहे हैं। अगर हम बाह्य साधनों का विकास करके ये पाना चाहते हैं कि हम एक दिन पूरी मानव जाति को सब समस्याओं से मुक्त कर देंगे, मेरा ख्याल है संभवतः यह सोच सही नहीं हो। चाहे कितना ही हम बाह्य साधनों का विकास कर ले, लेकिन आंतरिक रूप में जो हमारा ब्रेन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क इस प्रकार से सुख दुख की अनुभूति करता है और जीवन की जो सारी हमारी चर्या है, हमारा जो व्यवहार है, आचरण है, वो मूलतः
हमारे इन संवेगों से, इमोशन से ही कंट्रोल होता। मानसिक वाचिक प्रवृत्तियां भी अंततोगत्वा अल्टीमेटली कहां से गाइड होती है? इसका मूल की हमारे इमोशन। साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज न्यूरो साइंस ने साइकोलॉजी के इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया है, जहां साइकोलॉजी ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आर्ट फैकल्टी में पढ़ाई जाती थी, वहां न्यूरो साइंस जो मॉडर्न साइंस का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न रिसर्च का एक बहुत एडवांस फील्ड है, जहाँ ह्यूमन ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन ब्रेन की बायोइलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन ब्रेन की इमोशनल स्टेटस और उसके हॉर्मोन्स पर डीप स्टडी किया जाता है। यहाँ फंक्शनल एमआरआई ये बताता है कि ब्रेन का कौन सा सेंटर एक्टिव हो रहा है। ये बताता है कि नियोकॉर्टेक्स सेरेब्रम में क्या करता है और लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, हमारे इमोशनल ब्रेन का जो सेंटर है वो क्या करते हैं। ये बहुत डिटेल में आज साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एक अपने शोध का विषय बना रहे हैं। इतना तो निश्चित हो चुका है कि सब कुछ जो है वो एक बायोकेमिकल लैंग्वेज से ही निर्धारित होता है, चाहे वो जेनेटिक कोड है, आरएनए डीएनए कोड है, चाहे वो हेरिटेज में व्यक्ति को, प्राणी को मिली हुई एक सामग्री है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, अथवा तो हमारे ब्रेन की सिक्रीशन है, जो उत्पादन है, रसायन है, वो हमारे पूरे बिहेवियर को, हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे व्यवहार को इतना अंदर से प्रभावित करती है कि दूसरा ज्ञान चाहे कितना ही हो, व्यक्ति समझता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, व्यक्ति समझता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी मानव का काम नहीं है, ये मानवीय कृत्य नहीं कहला सकता। सब कुछ समझते हुए भी, जानते हुए भी आज मानव जाति उस पथ पर चल रही है जहां उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है। बेवश होकर के अपने हार्मोनल सिक्रीशन के द्वारा, न्यूरोसाइंटिफिक फिनोमेनन के द्वारा वो एक प्रकार से बेवश होकर के अपने पूरे व्यवहार को अपनी इन डिस्ट्रक्टिव इमोशन से विषाक्त बना रही है। तो वैयक्तिक जीवन में भी यही है। आज कई लोग मानते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा या टू रिच, पूरा, वो तो क्यों दुखी होंगे? दुखी होने का सवाल ही नहीं है। जहां पैसे से सब कुछ मिलता है, ये उसकी बिना दुखी क्या होगा? लेकिन सब जानते हैं कि क्या पैसा वाला और क्या गरीब, दोनों के जीवन में इन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो समान है, बल्कि कहीं कहीं तो शायद गरीब उतना दुखी नहीं होता है जितना एक अमीर उन इमोशंस के कारण दुखी होता है। ये सिनारियो पूरी मानव जाति का है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सारी मानव जाति इस प्रक्रिया में लगी हुई है कि हम मानव जाति को दुखों से मुक्त करें। समस्याएं हमारी ना रहे, साइंस हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और आज सारी दुनिया एक हो गई है। भले पॉलिटिकल मतभेद कितना ही क्यों न हो, जहां तक साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध है, आज चाइना इंडिया भी एक, आज रशिया अमेरिका भी एक है। जहां तक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, सभी साइंटिस्ट और सभी टेक्नोक्रेट्स और टेक्नोलॉजिस्ट मिलके कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग हो रहा है और नए नए इन्वेंशन के द्वारा लाइफ को और अधिक इजी, कंफर्टेबल और जिसको कहा जाता है हैप्पी बनाने की कोशिश की है। ये सिनारियो आज हमारे सामने है।
उसके बावजूद भी जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं वो देखने पर पता चलता है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट्स है वो देखने पर पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, हाउ द होल ह्यूमन काइंड इज रशिंग टुवर्ड्स टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल कैटेस्ट्रोफी। और उसका सबसे बड़ा खतरा है उन्होंने अपने पैदा किया है अपनी भोगवादी वृत्ति से इतना ज्यादा भोग, इतना ज्यादा उपभोग कि एनवायरमेंटल पूरे जो हमारा जो सुरक्षा कवच है उसी को तोड़ना शुरू कर दिया है। ग्लासगो जैसे कॉन्फ्रेंसेस कितने बार हुए, कितनी बार निर्णय किए गए, अब हम ज्यादा ये कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है। कानून कायदे कितने भी बने, प्लास्टिक यूज से लोग जो है ये नहीं सोचते कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, नहीं सोचते। जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन, आप डिस्ट्रक्टिव इमोशन से केवल ये न समझेंगे गुस्सा ही डिस्ट्रक्टिव इमोशन। हमारी जो ये वृत्तियां हैं, इसको अभी बताया गया परिग्रह, इसको लोभ की वृत्ति के नाम से बताया जाता है। जो ममत्व है, उद्गम के प्रति, मेदर के प्रति, व्यक्ति का, जीव का, आत्मा का जो एक मोह है, वो ही मुख्य कारण है इन सब डिस्ट्रक्टिव इमोशंस का। कषाय के नाम से उसे जैन दर्शन ने बताया। जैन दर्शन का कर्मवाद, कर्मवाद का मतलब भाग्यवाद नहीं है, कर्मवाद का मतलब फेडरलिज्म नहीं है। कर्मवाद एक कंप्लीट फिजिकल थियरी ऑफ लाइफ है। जैन दर्शन बताता है कि कार्मिक पार्टिकल, हम उसको कार्बोन्स कह सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, वैसे कार्बोन्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। और इनमें ये ताकत है कि वे आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, चेतना के साथ, आत्मा के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक लोलीभूत हो जाते हैं। और इनमें भी जो वर्गीकरण में मोहनी कर्म की जो पार्टिकल्स हैं, कर्म परमाणु हैं, इतने सशक्त हैं कि वे चेतना को विकृत कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। पर्सपेक्टिव भी फॉरवर्डेड हो जाता है, जिसको मिथ्या दर्शन कहा जाता है, और आचरण भी विषयीकृत हो जाता है। वही उसे फिर इस गलत आचरण पर, व्यवहार पर ले जाता है। ये संग्रह की वृत्ति, ये लोभ की जो एक एक्चुअल जो उसका बिहेवियर पर प्रभाव, और फिर स्वार्थ है, अभिमान घमंड है, माया कपट फ्राउड चीटिंग है, ये सारे उसके एक्कम्पनिंग पेशेंस है। इसको कषाय पेशेंस कहा जाता है। और उसी के साथ नो कषाय जो इक्विवेलेंट कषाय है, जिसको अंग्रेजी में कोजिटेशन कहते हैं, कोजिटेशन कहते हैं, वो भी भय के रूप में, सेक्सुअल डिजायर के रूप में, और अनेकानेक जो आकर्षण है एंटरटेनमेंट का, बाह्य भोगों का, उसके रूप में चेतना को विकृत बना करके, और आचरण और व्यवहार को जो केवल मनुष्य के नहीं सब जीवों में ये वृत्तियां हैं, संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा से लेकर क्रोध मान माया लोभ संज्ञा, ये संज्ञा, ये इंस्टिंक्ट सब जीवों में है, जो सारे जीवन को अंदर से कंट्रोल कर। अब हमें देखना है कि क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि मनुष्य इस जाल को तोड़ सके। बहुत कठिन है। तीर्थंकरों ने यह बताया है कि अनादि अनादि काल से अनंत 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 जीव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सोल्स इस संसार में है, हमेशा से है, फ्रॉम बिगिनिंगलेस टाइम, फ्रॉम चाइल्ड इमेमोरियल इनका अस्तित्व है। और ये संसार चक्र में इसीलिए जन्म मरण के गोते खा रहे हैं कि इनके भीतर ये मोह कर्म इन्हें विकृत कर रहा है, इसकी दृष्टि को विकृत मिथ्या बना रहा है, इसके व्यवहार को कषाय
नो कषाय से युक्त करके न केवल आत्म परिणामों को दूषित करता है, लेकिन उसकी जीवन की सारी प्रक्रियाओं को वो एकदम विष से भर देता है। और प्राणियों की बात छोड़े, हालांकि उसमें भी बहुत रिसर्च हुआ है, प्लांट लाइफ पर जो रिसर्च हुआ है कि प्लांट को भी कितना गुस्सा आता है, प्लांट को भी कितनी भीतर में सेक्सुअल अर्ज होती है, प्लांट को कैसे फियर परेशान करता है। ये बराबर है सबकी जीव आत्मा, चाहे प्लांट हो चाहे आदमी हो, मोहनी कर्म का प्रभाव सब पर है। लेकिन एक बार हम अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें, वो भी आज ये सेंचुरी हमारी है, 21st सेंचुरी चल रही है, कहाँ मानव था, कहाँ आ गया है। एक तरफ हम बोस्टिंग करते हैं कि मानव ने क्या क्या नहीं कर दिया, हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, आज हमने कर दिया। और दूसरी ओर जब मानव जाति की वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो लगता है कि सब विडंबनाएं हैं। जहां हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग केवल भूख के मारे मर जाए, कुपोषण के कारण अपने जीवन को समाप्त कर दे, और उस मानव जाति, मानव समाज में जहां कुछ चंद लोग इतना अधिका इकट्ठा करके अमीर बन करके उन लोगों को वंचित कर दे। पीपीपी इकोनॉमिक्स की जो टर्म है, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको जो डिस्टर्ब कर रखा है वो केवल इस कैपिटलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म में किया है। और आज पूरी दुनिया उसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को अपना आदर्श मान करके और डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है। पता नहीं ये गोल कैसे मिलेगा। ये मिल सकता है अगर केवल चंद लोगों को सुख और जो कुछ समृद्धि दे दी जाए, बाकी सारी मानव जाति 90% लोग रेटेड लाइफ, भूख से, औषधि के अभाव से और आदि आदि से अपने जीवन को समाप्त कर दें। इसके उपरांत भी जो ये डिस्ट्रक्टिव इमोशंस का नजारा है जो सब जगह है, अमीरों के घर में भी वैसा ही है, वहां भी टू में झगड़ा, पति पत्नी के बीच, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, लेकिन आपस में जब लड़ते हैं तो एक गरीब घर में भी शायद ऐसी लड़ाई नहीं होती है। वहां अहम दोनों का चरम सीमा पर होता है। हस्बैंड समझता है ये सब कुछ मेरी बदौलत है, वाइफ समझती है ये क्या है, हस्बैंड समझता है मैं हूं तभी सब कुछ है। और इस ईगो क्लैश के कारण आज एक स्पाउस का जीवन, बराबर दंपति जीवन विष से भर जाता है। एक दो घरों में होता हो, केवल गरीब के यहाँ होता हो, तब तो कोई कह सकता है कि इसका कारण है। लेकिन ये सार्वजनिक निशा एक सिनारियो है। तो कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा, जो ये हमारी आध्यात्मिक पराकाष्ठा है कि आत्मा को कर्म के शिकंजे से अगर मुक्त करना है तो सबसे पहले कषायों से मुक्त करना। क्रोध, मगन, माया, लोभ, राग, द्वेष और हास्य, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, ये सारा मोहनी कर्म का पूरा एक संसार है। सारे संसार को जकड़ रखा है और ये मोह राजा की महिमा कहलाती है। कहा गया है महके मोह राजरी महिमा अपरंपार। पूरे विश्व में अगर किसी की महिमा अपरंपार है तो वो मोह राजा की, वो कर्म की है, डिस्ट्रक्टिव इमोशन की है। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या कोई रास्ता है? क्या केवल एजुकेशन जो अभी चल रहा है, फॉर्मल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, करियर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इन वेरियस फील्ड, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये सब ना करने से लोगों के डिस्ट्रक्टिव इमोशंस का कंट्रोल हो जाएगा? और अगर नहीं होगा तो ये सब डिग्रियां, ये सब प्रोफेशन, ये सब करियर भले ही उन्हें वर्ल्डली लाइफ में ऊपर ले जाए,
वो अपने इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिलियल लाइफ में, सोशल लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। दुख की भी पराकाष्ठा हो सकती है, पीड़ा, वेदना, आंसू नहीं सह सकते। तो क्या हमें ऐसे ही जीवन जीना है? और अंततोगत्वा जैसा साइंटिस्टों ने वार्निंग दी है कि अगर इको फ्रेंडली जीवन नहीं बना, भोग उपभोग में सीमा नहीं की गई, कार्बन उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा, तो मानव जाति ही समाप्त है। क्या हम बहरे हो चुके हैं? नहीं सुन रहे हैं आवाज? अगर सुन रहे हैं तो क्या करना? क्या कोई उपाय है? केवल मटीरियलिस्टिक बेस्ड साइंस, फिजिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लाइफ को हम न समस्या मुक्त बना सकते हैं, न डिस्ट्रक्टिव इमोशन से ऊपर उठा सकते हैं। इसीलिए हमें अब स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस, एंशिएंट इंडियन लीगेसी, उसमें जो बताया है उसको बहुत ही विवेक के साथ विज्ञान की कसौटी पर कसकर परख कर अपनाना है जीवन में, जिससे हम दैनंदिन जीवन में, मिनट टू मिनट लाइफ में आवेश और आवेग को थोड़ा सा भी संयमित कर सकते हैं। हमारी जीवन उन सब विनाश लीलाओं से मुक्त हो जाएगा, व्यवहार मानवीय बनेगा। जो ये पाशविक व्यवहार है, ये पशु सदृश्य, ये दानवीय व्यवहार, ये समाप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से ब्रेन सिक्रीशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसी का दूसरा नाम है कर्मों के उदय भाव को उपशम, शायद और क्षेम भाव में बदलना हो। एक ही बात है, लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। Unless you control your bestial instinct, your phenomena taking place through autonomous system, through your RNA-DNA code, over which your neocortex, your rational brain has no control whatsoever. आप कितने ही ज्ञानी हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, आप अपने इन इमोशनल जो सिचुएशंस है उनको इच्छा से, मतलब केवल सोचने से, ज्ञान से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी अपनी आत्मशक्ति, आत्म संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेन, इनको मजबूत करने की, और इसके द्वारा इस सिचुएशन को जो नेगेटिव है, जो डिस्ट्रक्टिव है, उसको संयमित कर, कर्म कर, चेक कर, रिस्ट्रेन कर, और उन केमिकल, बायोकेमिकल हार्मोन्स का, उन बायोकेमिकल सिक्रीशंस का, उन न्यूरो हार्मोन्स को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ने होगा, जिससे हमारे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इमोशंस डेवलप होते हैं। मनुष्य के पास दोनों हैं, पाशवी और दैवी, दिव्य और दानवी, दोनों हैं। जो क्षमा है, परस्पर जो करुणा मैत्री का भाव है, ये हमारा सारा पॉजिटिव इमोशंस का एक पूरा स्ट्रक्चर है। हम कैसे उसे उद्भावित कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमारे दैनंदिन लाइफ में, बिहेवियर में उनका प्रभुत्व हो। घटना कुछ भी हो, आपने सुनी मक्खी की घटना, चाय में मक्खी और इतना आपस में कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ समाप्त हो सकता है यदि हमारी विवेक की थोड़ी जागृति हो, पर्सपेक्टिव बदले सबसे पहले, और बाद में हम अपने इन कषायों को कुछ कुछ कम खा सके। इसकी डिग्री जो इतनी ज्यादा है, उसको थोड़ा डाइल्यूट करके इतना करें कि दैनंदिन जीवन में परस्पर में हम इतना असंयम न करें, इतना गुस्सा न करें, इतना घमंड न करें, इतना लोभ स्वार्थ न करें कि हमारा व्यवहार एक मानवीय रेखा से भी नीचे चला जाए, पशु का व्यवहार बन जाए, और लोगों के लिए तो हंसी के पात्र बने,
और हमारे अपने जीवन को हम विष से भर दें। अमृत हमारे पास है, विष हमारे पास है। जीवन की धारा में अमृत की धारा को मिलाकर उसे मधुर बनाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, ध्यान, योग, तपस्या, उपवास, संयम, अहिंसा, मैत्री, करुणा, इन सब भावों की विकास की उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा। टेक्नोलॉजी मतलब साधना, चाहे वो ध्यान की है, चाहे वो मंत्र की है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे किसी धर्म की है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे हमारे न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में वो निमित्त बनती है, लाइफ की हमारी क्वालिटी बदलती है। फिर हम देखेंगे, कल्पना तो करें कि एक ऐसा समाज या ऐसा प्रशिक्षण बच्चों को शुरू से मिलता है, केजी से, नर्सरी से लेकर ऊपर तक, चाहे वो प्रोफेशनल जो कोर्स करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, फिर भी उन्हें यह मानव व्यवहार का इमोशंस के कंट्रोल करने के स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के उपाय अगर बचपन से सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस करा दी जाती है और एप्लीकेशन होता है, तो क्यों नहीं हम ऐसे एक मानव समाज की, एक मानव व्यक्ति और मानव परिवार की और एक मानव राष्ट्र की और एक अंतरराष्ट्रीय जगत की कल्पना नहीं कर सकते कि जहां फिर ये आने जो अभी वर्तमान में चलने वाली आपसी संघर्ष, हिंसाएं, युद्ध, शस्त्रास्त्र, क्या एक ही आवाज है बस, ये शत्रु है तो मारो, गोली मारो, बम लगाओ, बस। ये कहाँ का मानव समाज? जिस मानव समाज में प्रेम करुणा का दरिया बहना होना चाहिए। शत्रु के प्रति भी किस प्रकार हम अपने भीतर में मैत्री भाव पैदा करके उसके हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। ये केवल कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, जिससे शत्रु भी बदल जाता है, उसके भी हार्मोन हम अपनी भावना के प्रभाव से बदल सकते हैं। लेकिन हमें इसे प्रयोग के रूप में अगर लाना है तो पहले रिसर्च, डीप रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करना होगा और रिसर्च में जो हमारे नतीजे आएंगे उन्हीं के आधार पर फिर एजुकेशन में ट्रेनिंग, व्यापक ग्लोबल एजुकेशन में ट्रेनिंग, एवरी फील्ड, एवरी कोर्स, एवरी काइंड ऑफ एजुकेशन, सबके साथ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अनुस्यूत करना पड़ेगा। चाहे इंजीनियरिंग, चाहे मेडिकल, चाहे कुछ भी हो, साथ में ये ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन इमोशंस का कंट्रोल करने की प्रविधि, की साधना, इसकी प्रैक्टिस और छोटे छोटे प्रयोग, छोटे छोटे जो इजी टू प्रैक्टिस हो, बहुत बड़े नहीं, बहुत लंबे चौड़े नहीं, आम आदमी कर सके, छोटा बच्चा भी कर सके, करते करते आगे बढ़े। मैं समझता हूं क्या हम ये कल्पना नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। हमें आशावादी बनना है, हमें पेसिमिस्ट नहीं बनना है, हमें उटोपियन भी नहीं बनना है कि हम ऐसी कल्पना करें जो हो ना सके। ये इसलिए संभव है कि एक और हमारे पास वो हजारों विधियां, टेक्नोलॉजी की हजारों प्रयोग है, दूसरी ओर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के apparatus है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन पद्धति है। आज हम जैसे अभी इस मीटिंग को इस टेक्नोलॉजी के यूज से कर रहे हैं जूम के द्वारा, इसी प्रकार ये ग्लोबल एजुकेशन थ्रू टीवी चैनल, थ्रू दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन ना व्यापक बनाया जाए। सबसे पहले पर्सपेक्टिव बदलना होगा और उसके बाद में इसी रिसर्च को आगे बढ़ाकर, ट्रेनिंग को बढ़ाकर और ऐसे एक्सपर्ट बनाकर जो निस्वार्थ रूप में मानव जाति की सेवा में के लिए अपने इस कार्य में अपनी सेवा दे करके और मानव जाति को एक मोड़ देंगे, युग धारा को मोड़ देंगे, तो मैं अवश्य समझता हूं कि यह जो कल्पना है वो साकार होगी और सोमैया विश्वविद्यालय
इस दिशा में यह जो पहल कर रहा है जैन दर्शन विज्ञान की इन संगोष्ठियों में, आज ये दूसरी संगोष्ठी है, हम आगे बढ़ेंगे। अनेक अनेक वैज्ञानिक जुड़े हैं, जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक, कैसे विद्वान, कैसे अर्थशास्त्री, कैसे राजनीतिक पंडित, कैसे सब समाज के सब विद्याओं के पारंगत लोग इस अद्भुत मानव शक्ति को स्वीकार करते हैं और उनकी इस एप्लीकेशन के द्वारा पूरी मानव जाति की समस्याएं अनेक प्रकार की जो है, इसके मूल जड़ में ये जो कषाय है इसको अल्पीकरण करके और मानव जाति की जो क्वालिटी है उसको क्वेश्चनलेस, पूरा तो नहीं बना सकते, टू सम एक्सटेंट बना करके और ऐसी मानव जाति बनाए। इसमें फिर एकेडमिक रिसर्च हो, इसमें फिर टेक्निकल रिसर्च हो, इसमें फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, सब कुछ होगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। राजशेखरन पिल्लई ने एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में इसमें जो इंटरेस्ट लिया है, और श्री समीर सोमैया जी ने एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में इसको जो प्रोत्साहित किया है, स्वयं उसमें रुचि ली है, और हमारे ये सब वैज्ञानिक नरेंद्र भंडारी, डॉक्टर संचेती, आज हमारे डॉक्टर वीसी राज जुड़े हैं, ऐसे ऐसे अनेक विद्वान और वैज्ञानिक लोग हमारे साथ है। हमें पूरी आशा है कि हम इन सब चीजों को बिल्कुल संप्रदाय, धर्म और इन सब चीजों की भिन्नता से बिल्कुल अलग रख करके प्योर स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हुए, प्योर आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हुए मानव जाति को कषाय मुक्ति, किल मुक्ति रेव के पथ का पथिक बनाकर एक ऐसे साम्यपूर्ण, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और प्रसन्न और पारस्परिक सामंजस्य वाले समाज के पैदा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोग हमारे साथ हैं, इसलिए पूरी आशा है, विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो 12 महीने का ये 2 कार्यक्रम हुआ है, 10 बाकी है। हमें देखना है इस 10 में कितने लोग और जुड़ते हैं और 12 महीने के बाद ये विषय किस प्रकार वैचारिक स्तर से आगे प्रायोगिक स्तर, अनुसंधान स्तर और प्रशिक्षण स्तर पर आगे बढ़ता है। अभी भी हमारे प्रथम व्याख्यान, प्रथम कार्यक्रम के बाद में कुछ लोगों ने रुचि ली है, उनके प्रस्ताव आए हैं कि रिसर्च में जुड़ना चाहते हैं, तो है ये लोग जुड़ेंगे। आगे से आगे यंग लोगों को एक नया अनुसंधान क्षेत्र मिलेगा, जहां रिसर्च के द्वारा न केवल वे अपने आध्यात्मिक, अपने वैज्ञानिक जो अपना कर्तृत्व और अपना जो है एक विलक्षणता उसको बनाएंगे, लेकिन वह मानव समाज को एक सही दिशा देने में भी उनका वो कदम, उनका वो अवदान एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी भावना के साथ सभी समायोजकों, विशेष रूप से जैन इकोनॉमिक स्कॉलर हमारे नरेंद्र भंडारी, STRF जिसमें हमारे विशेष डायरेक्टर डॉक्टर संकेती और उसके व्यवस्थापक में अशोक जी कोठारी वगैरह सब लोग लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा यह प्रयत्न एक बहुत सार्थक प्रयत्न होगा और शीघ्र ही हम विश्व को ये आश्वासन देने की स्थिति में आ जाएंगे कि आओ पूरे लोगों को, पूरे मानव जाति को आह्वान करें। एक ऐसा मार्ग मिला है जो छिप गया था, जो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता था, आज अंधेरा दूर हो रहा है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संयुक्त प्रकाश से केवल वैज्ञानिकता भी संभवतः ये नहीं कर सकती है, कोई आध्यात्मिकता भी संभवतः ये नहीं कर सकती है। ये दोनों का योग, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता, दर्शन और विज्ञान, जैन दर्शन और विज्ञान, ये सारे मिलकर हम मानव जाति को नया प्रदान करेंगे। इसी आशा, विश्वास और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत साधुवाद। ओम।
Thank you, Munishri, for an enlightening, encouraging, and motivating talk on the theme. And now I'd like to introduce Dr. Prataap Sancheti, who is a lead scientist and doctor in this field, और क्योंकि वो neurologist है, तो neurological perspective से हम चाहेंगे डॉक्टर प्रताप संचेती हमें एनालाइज करें on neurological phenomenal role of limbic system as emotional aspect. डॉक्टर प्रताप संचेती, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप आपका माइक ऑफ है। धन्यवाद मुझे इस सभा में और संगोष्ठी में पार्ट लेने के लिए कहा गया है। जैसा कि मुनिश्री ने कहा है कि डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ये हमारे प्रयत्नों की, हमारे जो प्रयत्न जितने भी हैं उनको खराब करने की जड़ है। जहां तक मैं समझता हूं, 4 मोहनीय कर्म, स्टोरेज, संग्रहण, सुपरलेटिव, मैं बेस्ट हूं, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम द सेल्फ, ये 4 मोहनीय कर्म हमारे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के मेन कारण हैं। पर मैं इन एस्पेक्ट्स में नहीं जाके साइंस ऑफ इमोशन, इसके न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल, एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस जो कि इसके कारण हैं, एंड मेन इंपॉर्टेंट हाउ टू कंट्रोल दिस डिस्ट्रक्टिव इमोशंस थ्रू द न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड इमोशनल हाइजीन। ये मेरी आज की है और मैं चाहूंगा कि आप इसमें पूरा रुचि लें। और एक मिनट, इसलिए हाँ, आप फुल स्लाइड दिख रही है सब? मुनिश्री, फुल स्लाइड दिख रही है? नहीं प्रताप जी, ये आपको डेस्कटॉप शेयर करना पड़ेगा। डेस्कटॉप तो अभी दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, दिख रहा है। तो बस ठीक है, तो मैं इसी से चालू करता हूँ सर। हाँ जी दिख रहा है सर। Coming to the science of emotion, emotions are universal throughout the life, whether it's a plant life or animal life. In human, it is the facial signals, and sometimes not only verbal signals, but across the body, there are many changes which are emotional related. We will be talking to them. Science has recognized, or psychologists have recognized, 4 fundamental emotions: anger, fear, disgust, sadness, and enjoyment. These are the 4 fundamental emotions, both positive and negative. Some emotions are inherently good and others are always destructive or bad. Across the culture, trigger to emotions are universal. जो हमारे यहाँ खराब है, triggers वो दूसरी जगह, and brain responses जो कि इनसे related हैं, वो भी करीब same हैं, but they are very quick. Important to realize that these emotion responses are very quick and they happen to all of us. Let us talk something more about them. Coming to the definition, there are many negative emotions, being jealousy, anger, sadness, fear, grief, guilt, so on and so forth. But what important is they harm us. That's why they are known as destructive. They harm us mentally, socially, physically, or emotionally. They disturb, and not only they disturb our internal milieu, they disturb the external milieu also. How I'm suppose I'm angry, I destroy all the environmental problem and environment which are attached to me. So even it has been told that not only the negative emotions, sometimes good emotions, if they are obsessively pursued, means उसके पीछे लग गए, चाहे वो happiness हो, चाहे वो enjoyment हो, इसके पीछे अगर
पागलों की तरह लग गए तो वो भी आपको नुकसान दे सकते हैं. Similarly, suppression of bad emotions. It's like a pressure cooker that if you don't ventilate it, if you don't give a whistle to it and just to close it, it will burst. So the suppression of bad emotions are also harmful. So best is to ventilate and to change the destructive emotions. Coming to what is the difference between the Western or the scientific knowledge and the religious or the Eastern knowledge. From the science, emotions express either physiological, feeling, or through the behavior. So all three are there, whether my body changes, my feeling changes, or my behavior changes. As per science, basic reactions can be suppressed or managed, but they cannot be eliminated. That's what science speaks. But the religious and most of the philosophies, they believe that it is possible to cultivate attitudes in which anger is naturally absent. It can be eliminated. That is the basic difference between the scientific and the religious philosophy. Thus, it invites two important questions. Are humans by nature gentle, loving, or compassionate? Or we are born with all the emotions which have been given to us by the nature, which includes both good and bad. Second point, which I'll be concerning more, are good emotions antidote for the bad emotions. This will be my main theme of the talk today. Coming to which has been already told by Munishri, twin theory, the three stages of the human evolution. First, that is marked in the green color in the diagram, reptilian brain, mainly brainstem, and I don't have to enumerate all the structures, but this is basically to suraksha. Any life has been covered with the three aspects: security, nutrition, and reproduction. So reptilian brain, basically for the suraksha, security, that is the main. The next stage in the development, mammalian brain, which is there as we see in the many mammals like dogs, cows, other things. And this is the area which is marked in the white or the pinkish white. Limbic system, cingulate and early cortex. This is mainly concerned with the memory, emotions, and the social behavior. It's not that the reptilian brain or the animals with the reptilian brain don't have got emotions, but it is developed mainly in the mammalian brain. And here, the reward. We all know that our learning or our work depends upon the punishment or the reward. While reptilian brain only deals with the punishment, mammalian brain, in addition, deals with the rewards. So we say, if you do this one, you will get this one. The next important, our human brain, or we as a human being, are recognized by the big greenish blue shed on the top, the large area. We are master of this. But what we are fighting for the reptilian brain and the paleo brain or the mammalian brain. We are fighting at this level. We are not fighting, or we are not putting our efforts on the new mammalian brain, which is the executive control. We are all given with this brain, but we are underutilizing it, and we are overutilizing or indulged in the reptilian brain or possibly the mammalian brain. Negative emotions. Science believes that the negative emotions are as essential and as good as they are positive emotions. But how they become destructive? As per the definition, it is unpleasant or unhappy emotion to express a negative effect to an event or to a person. I already named fear, anger, anxiety, sadness, disgust, and many delusions, loneliness, melancholy. There are many, need not to name all the things. They're normal to experience. Important point, when they go out of control, they become destructive. And they become destructive to whom?
to others, to the self, and to our own inside body. Not self, not only my mood, it is to my own internal milieu also. And as you will see in the next diagram, amygdala, the structure in the limbic lobe, is the main center for the negative emotions, particularly the fear and aggression. And this is the area which needs to be controlled by various technology. Science has demonstrated that one. Science has recognized, we have enlarged our further from the concept of the reptilian brain to the real brain, how the things have been. As Munishri has pointed out, we have now gadgets where we can find out where the activities are going on. Main are like EEG, fMRI, functional magnetic resonance imaging. And we have seen that the people who are there with the destructive emotions, they've got high activity in the amygdala and right-sided prefrontal cortex, the anterior, the front portion of my brain, right side. That is the where you are seeing me on the left side, but it is on the right side, the right prefrontal cortex. Whereas the people who are with the serene state, who don't have got the destructive emotions, they are in the constructive emotions, their amygdala is less active, right prefrontal cortex is less active, and the left prefrontal cortex, the left side of the frontal cortex is much more active. So it is the balance between the right and the left prefrontal cortex that decides whether a person is with the destructive emotions or with the constructive emotions. Is another point of research which we can take. Can meditation or the dhyan changes the ratio of this for betterment? Means that making left more important or more prominent than the. This is again giving you the aspect of the limbic system, mainly the amygdala and hippocampus, and the prefrontal cortex. The anterior-most portion, prefrontal cortex. It is the executive control. It controls the amygdala and the hippocampus. So that we work in the proper way. We work in the social way. We work in the way where it is helpful to us and to the others. So PFC, prefrontal cortex, inhibits the amygdala and it leads to introspection and planning. That is the main important. So our whole aim of our spiritual training or the meditation or dhyan should be to enhance the prefrontal cortex, how they act to a betterment of our society. A good question, which is there, may not be agreed by the philosophers. All negative emotions necessary for the health. Science says all emotions are natural and okay. Why? Because it is the negative emotions give prominence to the good emotions. Without negative, good cannot be contrasted. But main important point, it is negative boost our chances of survival and to grow. But excess of that will always be bad. So excess, how anger is necessary to fight problems and this is something that blocks us. Fear, it anticipates threat and to protect us from that future danger or the coming danger. Sadness, it is how we develop, it is an extreme form of the compassion, where we respond to the loss and connect with those we love. Similarly, anticipation, to look forward and plan. Surprise, to focus on new situation. Joy, positive emotion, to remind us what is more important. So there are so many emotions which have got both good and the bad qualities. And excess of, as I told, good emotions are also sometimes harmful. If you look into this one, our emotions are not always like this one, in the middle where they are fighting with each other. Everything is brain and mind. Munishri has given you in the detail. It is brain and mind, which there, though brain is structurally known to us, mind, we are now relating, it is also part of the brain, both though chemically or spiritually it may be related to it. And we develop our reactions or reaction to any emotion
through the behavior, autonomy component, and the hormonal component. In this diagram on the left side, stress induces the sympathetic response, and too much calm reduces the parasympathetic, where in parasympathetic, our breath is slow and deep. In contrast, with the stress, the heart rate is more and the breath is fast and shallow. Gut is inactive, gut is active. So it is more in the parasympathetic, it is mainly constructive, it is mainly active. So, but even hormones also, they are changing a lot. Two more important. There are many more important, but I'll just concentrate on the two hormones, serotonin and the dopamine. Serotonin, everyone is now well known in the research module that low serotonin is with the impulsive and aggressiveness. If the serotonin is more, you are quiet and your sleep is better. Same thing is true with the melatonin also. Another point is that dopamine. Excess of the dopamine, what we are perhaps craving in these days, because we want to have more attention and we go for the drug addiction and the gambling because of that. There are other things like oxytocin, female bonding with the offsprings, male aggressiveness with the vasopressin and the androgens, GABA, which is an inhibitory hormone. If it is less, it also increases the aggression. And the main center for all emotions are structurally in the hypothalamus, where both 5-HT, that is serotonin and melatonin, suppresses aggression and their deficiency causes aggression. But everything is not bad or not so gloomy. We have got chances and we can improve. That is through the positive psychology. What other thing is known as neuroplasticity? Means you can change your brain structure. You can change your genetic structures with the certain practices. Possibly can be labeled as a spiritual technologies. Environment and emotional experience, they always change our brain to the better one. If you got more positive emotions like love, joy, satisfaction, contentment, amusement, happiness, interest, and serenity, the negative emotions or the destructive emotions will go down. So use our regions and intellect to improve emotional balance and change the brain functions. What science has told us, fMRI studies have told us that the amygdala and hippocampus changes if we have got our positive experiences and emotional environment. This is a timeline, emotional timeline, which must be understood by you all if you have to control your emotions. It begins with a trigger. Any emotion is the result of a trigger and ends in a response. Look into the diagram. After the trigger, that is the green one, which is there in the initial phase, the trigger and this one, this is the phase which is very important, because in this phase, we are blind to all other regions, all our understanding. And if you don't follow this period, which is called a refractory period, we are engrossed in the trigger which was there. Suppose you have just annoyed me. You entered in my room without my permission. I get annoyed. During this period, when I start getting annoyed and you entered, I am blind to all other reasonings. I'm blind to all other my prejudices. I just keep on thinking that you have entered, you have entered, you have entered. And my mind works in this one. So if I increase my self-awareness, learn to pause before respond. You entered in my room, and before I react, I give a pause. I just think the situation for a second, a millisecond only, not the say for 1 minute or 2 minutes, milliseconds, or the little more. My self-awareness, then I can improve my reactions to you. And what important is, the reaction which is coming may not harm you, but definitely harms me. That's why I teach everyone that
you waste your hormones like adrenaline or the other dopamine. You waste it for the others, not for yours, because you are causing harm to you. It has been seen that whatever the treatment, whether the pharmacological treatment, physical treatment, or the social treatment, meditation, they all train mind to shorten this refractory period. So you are blind to the reactions only for few. If it was a 50 milliseconds, now it comes to the 25 milliseconds. So during and after 25, you are again back to your conscious. So good antidote, apart from the medicines, which are not many, and in fact, they are not none. Constructive emotions are the antidote for the destructive emotions, like we talk of any poison, antidote. Constructive emotions are realistic with valid reasoning, whereas destructive emotions are impulsive based on illogical reasonings. Constructive emotions causes increase in emotional immune systems, while fear, anger, greed, they destroy the calm mind, and to fight anger and fear, develop love and compassion. So all constructive emotions, they can be a good antidote for the destructive emotions. And science has also demonstrated with the particular fMRI and hormonal studies that brain changes for better when we practice positive emotions or constructive emotions. So question comes, how to develop this positive emotions? First, recognize your emotions. Recognize the triggers which makes you unhappy or which makes you violent or other way. So trigger, emotional reactions, and what the behavior. If you read and understand your own persons, so what is your own trigger? What is your own emotions which needs to be controlled? As I told you in the like a pressure cooker, if you ventilate at this place, the behavior response of the or the bad responses will not come further. So you connect with your body. And as I told, the emotion expression is not only the verbal, it could be non-verbal, particularly the face. Facial expressions are much stronger in expression than the verbal expressions. And not only the facial, my muscles also get tightened. My skin also gets a resistance which is more than what is needed. In addition, my internal body, particularly body temperature, breathing pattern, heart rate, skin sensitivity, they all are changes with the bad emotions. So I must control through that. Meditation teaches all these things. Manage reactions, learn to pause before respond. I already given in the last one. Then adjust and learn to perceive, appraise, and express accurately. You must ventilate, but ventilate accurately. Practices improve the ability. Clean mind creates loving kindness and happiness. Now to conclude my talk, I'll be just a minute. We all are based on the genetic background. We work with the genetic background through which our mind, the slide unfortunately is not coming properly. It is mind which is either subconscious or the conscious mind. It is the subconscious mind which incites the emotions. Consciousness is controlling the emotions, but subconscious is the one where the emotions are generated instantaneously. We have to control, we have to reshape our subconscious mind through the practices. And once the emotions are controlled, our expression, whether it's a verbal, non-verbal, or internal changes, they get changed. And finally, the appreciation of the situation is much more important. I end with a quote that our thoughts are private, but emotions are public. So let us go that our private property doesn't become a public property. Thank you very much.
Abhijit Muni, you are mute. Dr. Sir, you can stop sharing your screen. Okay. Thoughts are private, emotions are public. And a publicly lecture by Dr. Pita Sensitivity on emotions and enlightening one with a scientific insight into it. And now we would like to listen from from Kamal Naulakha, Kamal Naulakha, who will discuss about emotions and economics connection. How economics, application of brain principles and economics can be very supportive. How we link the system of emotions and economics together. So let's listen, Dr. C. Kamal Naulakha, with his enlightening research. A research student working on a doctorate on economics, brain principles and economics. Yes. Thank you, Munishri. I take this as a blessing that you are already fixing my name with a doctor, which I am already on the way. So I thank you very much in advance. But you know, Param Adarniya, Professor Mahendra Muni, respected Vice Chancellor Sir in absentia, the Honorable Rayas and the learned audience. Jai Jinendra. Dev Guru Dharam ko Naman. And I'm grateful for a very liberal introduction about me. I'm thankful for giving me the opportunity to share my views on the application aspects of the principles of Jainism in the vast field of economics, which incidentally is the subject of my ongoing research. I have to actually go little fast to cover the vast subject assigned to me, unless the coordinator is pleased to kindly give me some extra minutes to complete my conclusion. I would like to begin my talk, first of all, with a discussion on how relevant is economics in Jainism, because Jainism is a form of absolute idealism or pure spiritualism. A question would arise as to what relevance Jainism has with economics, which is essentially out and out a domain of worldly affairs, especially money. In order to comprehend such relevance, we have to keep in mind the non-absolutistic approach of Jainism towards truth, which is Anekantvad. As such, one has to keep in mind the basic philosophical doctrines as regard the higher purpose of human life. Succinctly, basic philosophical doctrines in this context are enshrined also in the great treatise Samaysar by Acharya Kund, Sutra 14 and 15 there mentions that each living organism is potentially an enlightened soul, exactly identical to one another and endowed with infinite knowledge, bliss, and power. Although the best utilization of human life lies in leading an ascetic life with an intent to gradually become free from karmic bondage and ultimately attain the state of emancipated soul, yet as it is not possible for everyone to take to ascetic life, one should at least lead a life of spiritualistic sadhana as laid down in also the Uttaradhyan chapter 5, 23 and 24 sutras elaborate about this. Since the lay follower is a social being, he has to fulfill his worldly duties and responsibilities throughout his life. Nevertheless, persistently, he continues his efforts in the direction of attainment of ultimate goal, and as such, even in the domain of economics, as enumerated in Upasak Dasao, he gives priority to self-discipline, observance of ethical principles, and also the spiritual lifestyle. Now, let me come to the concept prevailing in the modern economic environment, the current economic theories. Keynes, who is considered to be the father of economics, strongly advocated the theory that development is measured by promotion of only self-interest. He said clearly that the time has not yet come when we should think about values or about morality. When all become rich, then only it would become necessary to think about the subject. On the other hand, Marx, who was the proponent of communism, focused on the labor theory of value and the theory of surplus value, which he believed
explained the exploitation of labor by capital. In Marxist socialist economics, the highest goal is that each and every member of the society ought to get both happiness as well as material satisfaction. Gandhi, on the other hand, emphasized on peace, trusteeship, and cooperation that has been publicized as an alternative to the competition as well as conflict between different economic classes in the society. His doctrine of trusteeship is a social and economic philosophy aiming to bring justice in the society. That is again inspired by the Mahavira's principle of non-possessiveness. Thus, there prevails a great confusion, at least in theoretical perspective, as to which of these above models that we have discussed, Keynes, Marx, or Gandhi, is the most suitable and practical in the modern context. Considering all pros and cons of the available models, it appears that the only and entirely innovative approach, that is humanistic economics, I repeat, humanistic economics, which comprises of an amalgamation of all models, imparting them their due relative value, which would pave the way for a needed sustainable model, because it has to be sustainable as well. Economics is considered to be a bedrock of all mundane activities in the entire universe. Creation of wealth and its accumulation without any limit is called greed. And that is the destructive emotion, which is the broader subject of this session today. Here, a question may arise as to how the entire modern development would have taken place if the element of greed had instigated the people to innovate the myriads of technology, which has ultimately made the unprecedented progress of the humankind. Although the apparently such doubt carries weight, I don't say they are foundless. Yet, if its holistic development is taken into account, it would become clear that the doubt was only superficial. Why it was superficial is because the materialistic development is only a small fraction of the holistic development, whereas the more significant and malleable aspects of human development comprise of spiritual, emotional, ethical ones, as well as the mutual relations. It goes without saying that in spite of gigantic progress achieved by humankind, it has suffered enormous losses in terms of evolution of human values such as universal compassion, inner peace, and last but not the least, the tearing of the social fiber of congenial relations of man with man in all possible fields. The present economic goal is to make everyone wealthy, and in attaining the objectives, ethics has lost its own value. Morality is not only seen as being irrelevant, but has an impediment in the path to achieve this goal. The basis of both capitalism and communism is undoubtedly the materialism. And now let me turn to the China view on the economic concepts as a solution to the problems created by the current developmental model of economics. That is the modern economics I'm talking about. Bhagwan Mahavira was not an economist in the sense within the meaning of the term economics as defined in the Oxford Dictionary of Economics about how to use scarce resources to satisfy the wants and needs. He did not say about this. However, Acharya Mahapragya, through his deep studies on the canonical scriptures, was successful in promulgating the basic concepts of economics enshrined in Jain philosophy, which he termed as relative economics, centering around the human beings. According to Mahavira, the more the materialistic development, the more will be the augmentation of slavery to and physical objects of enjoyment. One cannot survive without food. Eating is a crime. Then the only legitimate means left for existence is earning right livelihood. Each householder is dependent upon it for his survival. The person believing in non-violence and limiting the desires gets to become aware of purity of means of earning money. He does not earn by hook or by crook, but chooses such means
which neither harms his own conduct nor blemishes the social or the national character. Although science and technology have definitely not made the humankind free from hazardous lifestyles, yet they are believed to be the main culprit in the creation of disastrous climate change, environmental pollution, widening of ditch between the rich and the poor. Hence, the moment has come when spiritual technology, as we are discussing under this banner of STRF and the other organizations attached with it, the time has come when spiritual technology needs to be brought in the forefront, and the scientific research has to be conducted and validated the theories. I'm drawing support from Jain canonical text in this respect. Daswayalin second chapter states that kame kamahi khamiyam dukham. It means that if the desires are overcome, the suffering will be overcome by themselves. You don't have to put any further efforts. Uttaradan chapter 9, sloka 48 also mentions Ichha u agasa sama anantya. It means that the desires, being endless like the sky, can never be satisfied by any number of means whatsoever. Mahatma Gandhi has also asserted that the world has enough for everyone's need, but not enough for anyone's greed. The reason is that the human psychology enforces men so powerfully that the more the gains increase, the more augment the greedfulness. And I quote Uttaradhyan, chapter 8, slok 17, Jaha laha taha loho pavadhai. And there's yet another millennium old adage in Sanskrit as given in Bhartrihari Niti Satak that asserts Ahar nidra bhaya maithunani samanya metat pasubhir naranam dharmo hi tesa madhiko vishesha dharmena hina pasubhi samana. It means that the food intake, sleep, fear and sex are common in both the animals as well as the humans. But what man with the practice of righteousness is nothing else, without the practice is nothing else but equivalent to an animal. And a very popular dictum in Anuvrat movement was propounded by Acharya Tulsi in 1949 that said Sanyama Khalu Jivanam. That broadly means that the life itself should comprise of self-constraint. This points also to the doctrine of minimalism, where self-control is taken as a tool for utter satisfaction in life. Minimalism is deliberately living with only the things that one only needs, those items that are support the objective only. Even Sant Kabir, in one of his popular compositions, has gone on said to support the concept of minimalism, if I can say, is Sai itana dijiye jame kutumb samay, main bhi bhuka na rahun, sadhana bhuka jaye. So what we always have is a question of self-restraint. And though all the 11 Jain vows are roadmap to the path of sustainability, the two vows known as Parigraha Pariman and Bhogopabhog Pariman, limiting one's possessiveness and one's consumables and non-consumable goods, are the perfect antidote to the culture of consumerism. Only if these two small vows are practiced by the people, irrespective of their caste and creed, the eco-sustainability of the future can be ensured. Let us now understand the concept of humanistic economics that I referred earlier, which is a boon in the present scenario. Relative economics that has humanistic approach is an economic thought based on the philosophy expounded by Bhagwan Mahavira. It is an economics based on spiritualism, which lays emphasis on self-restraint, non-violence, truth, and other such virtues, which should be followed in actions so that there may be lasting peace in this society. Modern economics is based on a single track of materialism, whereas Mahavira's economics is based on the acceptance of both materialism and spiritualism. Modern economic theory
capitalism has set a goal that men must become wealthy anyhow, in contrast to the economics of Mahavira, that is sustainable, that man should live his life peacefully and happily. Peace does not come with materialism, and Bhagavan Mahavira says, devoid of peace, one cannot get happiness. When we go through the Jain scriptures, we find that non-possession is more important than non-violence. The main cause of violence, therefore, is possession. So it can be said non-violence is secondary, whereas non-possessiveness is the main principle of Jain philosophy. This is why Acharya Mahapragya rightly said, aparigraho paramo dharma, rather than the earlier dictum, ahimsa paramo dharma. And this has a very important relevance in the present discussion of the application of economics in the Jain principles. Let me now elaborate on how Jain thoughts are environment friendly and also sustainable that I've been saying. Jainism throughout the history of mankind has played a very vital role in the preservation of environment. Bhagavan Mahavira millennia ago postulated that biologically there is no difference between man and tree, for both have life, they take birth, they take food, they survive, and both die without food. Munishri Mahendra Muni in his opening remark has also elaborated on this, and hence Jainism prescribes, as elaborated in the very first chapter of Acharanga Sutra, social and religious sanctions. Social and religious sanctions against misuse, excessive use and destruction of basic constituents of our environment, that is earth, water, air, fire and vegetation, are very important. You see, there is yet another sutra I would like to quote, which is in Desve Kalik's. The opening sutra says, Dhammo mangal mukti ahimsa sanjamo tavo devavi tang damang santi jas dhamme sayamano. It broadly means that dharma, which is righteousness, is in itself the most auspicious virtue. It comprises of three basic spiritual traits: non-violence, self-discipline, and austerities. Even the divine beings revere the one whose mind remains steadfast in the dharma. Now, sustainable development means development, and I'm quoting from the Brundtland's report, that meets the needs of people today without compromising the ability of future generations to meet their needs. Sustainable development focuses on improving the quality of life for all the Earth's citizens. I repeat, Earth's citizens, without increasing the use of natural resources beyond the capacity of the environment to supply them indefinitely. Natural environment comprising of four main spheres: hydrosphere, atmosphere, lithosphere, and biospheres, which respectively refers to the elements of water, air, land, and microbes. In Jaina philosophical terms, the jiva is also classified with respect to 6 kinds of material used to build the body, which are natural elements: Prithvi Kaik, Apakaik, Tejas Kaik, Vayu Kaik, Vanaspati Kaik, and Tejas Kaik, Tras Kaik, which are again earth, water, fire, air, plant body, and of course the mobile body. Now, I just want 2 more minutes and I will conclude. The practical application of economics, I want to go little international as to what they have to say. The practical application of economics in Jainism prevails abundantly in the United Nations 17 Sustainable Development Goals, the SDGs, to transform the world by the year 2030. And I will just read out particularly as an illustration a few goals that seem having roots in Jaina principles. Goal 1 says no poverty, 2 says zero hunger, goal 6 is on clean water, goal 7 talks about affordable and clean energy, goal 10 talks about reduced inequalities, goal 11 talks about sustainable communities, goal 12 talks about responsible consumption and production, goal 13 also talks about climate action, and the list is like that. The best and the everlasting solution would be to replace the modern economic model by one
which is based on bringing about a more fundamental transformation in human consciousness itself. That is where we begin with the consciousness, so as to make it powerful enough to win over the natural instincts of greed and reconstruct a sustainable form of social setup, wherein although the material prosperity is not denied, if the chasm between the haves and have-nots would be narrowed down to the minimum, I'm not saying will be eliminated. Consequently, the humankind, in spite of technological development, would never lose sight of eco-friendly environment and the ecological balance, which even the United Nations SDGs proclaim. This putting into practice the lofty human values like non-violence, compassion, self-discipline, limited desires, and last but not the least, the universal peace and harmony based on the practice of development of positive human emotion in individual, familial, social, national, as well as international relations remain. Let me conclude. As Munishri had already elaborated, the purchasing power means the amount of real goods and services that each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index. Purchasing power parity, that is PPP, is the theory that enumerates not only exchange rate between the currencies, but it also determines in the long run the amount of goods and services that each can buy. Now let me come back to the Jainism concept. The three foundations of modern economics first are desires, needs, and demands. Multiply the desires, increase needs, and expand demands is the emphasis in the modern economics. No doubt desires are limitless. Wants are desires for a specific satisfier of these deeper needs. Demands are wants for specific products that are backed up by an inability and by an ability and willingness to buy them. Whereas need is a state of felt deprivation of some basic satisfaction for survival. From a comparative point of view, the domain of desires is extensive, the spread of demands is smaller, and that of needs is still smaller. The modern economics emphasizes money to be at the center, leaving humans with their respect for values at its periphery, with the endless desires to keep chasing. As against this, the relative economics adopts a model where human beings are in the focus. They are in the focus, and the money is only in the periphery. And not only that, the endless desires have to keep chasing. The money is not the focal point. And the relative economic adopts a model where economic is only a way for survival, adopting purity of means and humanistic ethics. My last final sentence here is again coming to Jain canonical text, Acharang Bhashyam, where in Sutra 180, Sutra 80 says, Ichhatam Gadhi Loe. The root cause of all evils lies in the economic mindset of the people at their own level of interaction. The Jain agamas are endowed with panacea for such evils by way of being conscious on practicing ahimsa and aparigraha as the major principles to be practiced. It is widely agreed, and I emphasize it is totally agreed, that the wealth is required for one's living, as against the prevalent practice of one living for wealth. That is the main difference. The time is up, and before the coordinator would remind me about it, I would like to thank you very much for your kind attention, and I'm open to any queries in respect of the topic that has been discussed. Om Maram. Thank you very much. A wonderful comprehensive talk by CA Kamal Naulakha and 2B Dr Kamal Naulakha. तो बहुत ही अच्छा लगा, और अब समय है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के अंतर्गत हम सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, GAS, Indian Academy of Scholars,
को लीड करने वाले एक pioneering scientist and space scientist, so Dr. Narendra Bhandari, kindly share your enlightening views on in this brainstorming session. Thank you, Muniji. Today's session has been very informative and brought out many things which are important in our daily life. Munishri brought out the importance of spiritual technology in controlling these destructive emotions. And Dr. Sancheti talked about chemical, hormonal, neurological aspects, how emotions destroy our physical aspects. And of course, Kamal Naulakha ji, he connected it to the lifestyle, parigrah and economics. Now, I just want to make a Dr. Bhandari, you are mute. even in same conditions, everybody's response is different. And that is where technology, today's technology comes in. So we have to connect spiritual technology with today's technology. And in this connection, I just wanted to bring to your notice that we are developing a mobile app which gives you violence counter. Because when the Pratikraman and all these, our lifestyle was designed long time ago, life was simple and manual. But today it is all mechanical and we are not even aware of how much violence we are committing in our daily life. We just take our car and go, or we do whatever, technology demands. So we are trying to develop a violence counter, just like calorie counter. So at the end of the day, you can know how much violence you have really committed, and you can control. It also gives you suggestions as how you can reduce the violence, because violence and emotional, these destructive emotions and our bodily, physiological, this hormonal and neurological functions, they are all interrelated. So to control it, I think it is important to know at the end of the day how much violence you have conducted. And our Jain Academy of Scholars is working in this direction, and I think this will be a useful app. On one side, we have our sadhu sant who have very simple life, and of course we cannot imitate all that because of our compulsions, but at least at the end of the day we must know what we are doing to the environment, what we are doing to the earth, and what we are doing to ourselves. So we are just this is one of the activities I wanted to bring to your notice. Thank you very much. One more suggestion I will like to give to Bhandari ji, that the Pratikraman is to be done twice a day. Just beginning of the day, which we call as a Raishi Pratikraman. That is at the end of night and beginning of the day. The Pratikraman is there because the day is starting, and at that time that act will automatically ensure me that during the daytime I will be cautious against becoming violent or angry like this. And in the end again, the Pratikraman, the act will counter whatever violence I have committed. So both times, in the beginning of the day, at the end of the day, Raishi and Devishi Pratikraman. That is how to first become cautious through the daily activities we pass, and again in the night to refrain from whatever misdoing we have done like this. So 5 minutes each in the morning and in the night are enough to mold the whole life to remain aloof from violence.
it is a very good idea that violence counter act will be a universal act and will help people live a life free from violence. Thank you. यू आर राइट सर। वो सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। अभी हम 24 आवर का ये डेवलप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट। Now we would like to listen the views of Dr. S.T. Jain, Siddhartha Prakash Jain, Professor Siddhartha Prakash Jain, and all our target is to achieve that Siddha Atma Prakash. So you can share your views here from Mammalian University, Dharma Studies Department. Professor there? Yes. आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। सर्वप्रथम मुनिश्री जी को चरणों में नमस्कार करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक जय जिनेन्द्र बोलता हूँ और सबके हार्दिक स्वागत के उपरांत सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात जो है रखूंगा। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, ये जो आज का विषय है, इस विषय के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि निशस्त्रीकरण का बहुत ही आज के युग में बहुत जरूरत है। डिसआर्मामेंट जिसको बोलते हैं, निशस्त्रीकरण। आजकल जो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्रों का जो विकास हो रहा है, इस सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि भय उत्पादन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निशस्त्रीकरण है वो क्यों जरूरी है। आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं, सभी ओर भय है, अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं के चलते हुए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विकास हो रहा है। हमें लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास कर रहे हैं हम लगता है कि विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। हम जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी वैसे वैसे दुविधाएं भी बढ़ी। आप देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, कोई भी चीज देखिए, जैसे जैसे सुविधा बढ़ी दुविधाएं भी साथ में बढ़ी है। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें बाहरी शस्त्रों से नहीं, आंतरिक शस्त्रों से लड़ना होगा, उन्हें नष्ट करना होगा। हमारे अंदर ही सबसे बड़ी आयुधशाला है, हमारा मन ही सबसे बड़ी आयुधशाला है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, गोमट सार में भी लिखा है, सॉरी त्रिलोक सार में लिखा है, और यति वृषभ जी ने त्रिलोकपनत्ति में लिखा है कि मन से ही सबसे ज्यादा पाप होते हैं, क्योंकि जिसके पास मन है ना, वही एक नरक से आगे, यानी कि जो असंगी है वो पहले नरक से आगे जाता ही नहीं है। असंगी जीव इतना पाप कर नहीं सकता कि वो पहले नरक से आगे चला जाए। यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे ज्यादा जो विनाश है, खतरा है, वो हमारे मन से ही शुरू होता है। ये बात बताए। एक दूसरी बात स्थानांक सूत्र की बताता हूँ। स्थानांक सूत्र में लिखा है कि 10 प्रकार के शस्त्र हैं, जिनमें नमक भी एक शस्त्र है, अग्नि भी एक शस्त्र है। जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती है तो ये बड़ी बड़ी चीजों से लड़ी जाती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि बड़ी ऐसी स्थिति है कि आज हमको बाहर के शस्त्रों को नष्ट करने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा कि विरोध भी करना हो किसी का तो बिना शस्त्रों के करे। कहने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर, मन के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको पहले खत्म करनी होगी, तभी हमको जो है ये बात समझ में आएगी। जितनी भी लड़ाइयां बंदूकों, तलवारों, तोपों से नहीं लड़ी जाती, उतनी लड़ाइयां हमारे मन, वचन और शरीर से लड़ी जाती है। यानी कि जो सारी समस्या है हमारे मन के भीतर से स्थित होती है। सारे शस्त्रों का केंद्रीय स्थल प्राणी का भाव है, इसलिए वहीं से हमको जो है इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ही 5 मिनट का समय मुझे चाहिए था। इतनी ही बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूं। तो बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर सिद्धार्थ प्रकाश जी ने रखे। इसी क्रम में डॉक्टर एस.सी. महेंद्रा, ललित जी मेहता, डॉक्टर सुरेश शाह, अरुण भाई द्विवेदी, इनमें से जो भी यहाँ हो वो अपने विचार अपने रख सकते हैं। और आगे क्रम में डॉक्टर सुशील रॉय, वी वुड लाइक टू स्पीक अ वर्ड। Yes, yes. Can you hear me? Yes. A few words, sir. Yeah. So I have some queries related to neurophysiological aspect of emotions. I mean,
good emotions or bad emotions, they are both perturbation of the mind. And Patanjali Yogasutra says that chitta vritti nirodho, I mean cessation of perturbation of mind. So if we start meditation, both type of emotion should be eliminated. But now the question is how we can keep the good emotions and how we can eliminate bad emotions from neurophysiological point of view. Yes, As I pointed out, sir, that with the anger or the negative emotions, it is the right prefrontal cortex which is more active. Whereas when we are serene or in the good emotions state, it is the left prefrontal cortex which is more active. So if we develop some of the activities as a biofeed mechanisms or through the channelage or demonstrating which are the activities which are going to increase our activity in our left prefrontal cortex, perhaps that may be the answer to your question. one more thing I will add to this is, in Jain principle, the word yoga is a technical word which connotes our mental, physical, and vocal activity. Man, vachan, kaya. So all our emotions ultimately culminate in our activity of our thoughts, of our speech, and our body. So now this yoga, this man, vachan, kaya, three types of yoga, they are shubha and ashubha, auspicious and inauspicious. And these destructive emotions, they result in our ashubha yoga, our evil mental activity, our thoughts, our evil speech, and our evil physical activity like violence, etc. On the other hand, the other is the Shubha Yoga, and our positive or our auspicious emotions like Shama, Karuna, Maitri, Prem, all these, they culminate into our Shubha Yoga, mental, vocal, and physical activities which are auspicious. Ultimately, when one enters into complete liberation state, there is moksha or nirvana, then both Shubha as well as Ashubha, both yoga are eliminated, and that is chitta vritti nirodha, that is yoga. In that sense, so in the beginning, we have to make the antidote of the auspicious against inauspicious. And ultimately, in the end, when both are not required, that is in the ultimate state of nirvana, the Shubha Yoga as well as the Ashubha Yoga, both are then given up, and this one becomes three-pronged yoga, which is called Ayoga. That is beyond or transcends all activities and remains in pure consciousness. So this is the hierarchy, how we have to go. In the present life, we have to utilize the positive emotions against the negative and destructive emotions, which are evil as well as the sources of suffering. And then ultimately when we become complete and we become perfect, then both the Shubha Yoga and Ashubha Yoga, both are then stopped and we become Ayoga. That is completely free from all emotional outbursts and become completely, it is called equipoise or it is called equanimity, samata, vitarabta. That is our aim. That is ultimate. So the way is from negative to positive, and then ultimately freedom from both. It is what I have understood. Thank you. Yeah, thank you so much. Okay, namaste. Nice to listen from Dr. Sushil Roy and Munishri, and now we would like to word from Supriya Ji Rai from the Department of Brahma Studies, Director, Department of Brahma Studies in India. मुनिश्री आपको प्रणाम, अभिजीत मुनि आपको भी
and very warm greetings to all the wonderful scholars and the scientists who are gathered here. Just a couple of quick comments on some of the deliberations that occurred. With Dr. Sancheti, I think there is a very interesting possibility that we can look at with discussing with our students, incorporating some workshops for our students where we actually show the medical side of these kinds of emotions. And Munishri, you know, especially with young people on our campus, I think sometimes young people experience, probably as a result of the pulls and pushes of adolescence, etc., a lot of destructive emotions where there doesn't seem to be sometimes an avenue, you know, how to express. And sometimes they get angry, or sometimes they behave in questionable ways, or, you know, they're fighting with their parents. Adolescence is a difficult time. So it would be nice if we could create some forum where, you know, for them to just express how they feel. There could be a non-judgmental support system, and we actually sort of counsel, and they could be from any background. It could just be you know, like in schools, for example, there are counselors, even on our campus there are. And I was just thinking that we could probably create some sessions, some forums for students to come and share. How do you feel? What makes you angry? Why do you get angry? How do you feel when you're angry? So they get sort of in touch with their emotion. We can give the spiritual knowledge, and we can give the medical knowledge, and help them to reflect and, you know, maybe perhaps bring about sort of, it may not go away, but at least the intensity reduces, they start to see the benefits, all that. The other thing that I wanted to comment on, I absolutely enjoyed Mr. Naulakha's, you know, sort of explication of the economics aspect, because in our country, which is a poor country, the economics aspect plays a very important role. And everybody has to necessarily, if we look at it from a strictly spiritual perspective, Munishri, I would like to submit that just by living on this planet, in some way, we already cause some imprints of hurt and damage to the planet Earth. But the fact that he connected it with the, you know, sustainable development goals and the kind of concerns there, I think there again, there is an opportunity for some practical applications, which again on our campus, for example, I'm not talking of sustainable goals or any of that, but I was just reflecting that there are so many things that go on, for example, which allow us to, Munishri, I don't know whether, you know, on our campus, all the wet garbage is, for example, composted. We reduce the load on, you know, the environment of what we throw. The use of plastic is discouraged. There is a lot of rainwater harvesting which goes on, and we are recharging aquifers and saving crores of liters of water. And perhaps we could create small communities which live in the ways that we are speaking of, so that there is a demonstrable model, you know, because no matter how much we speak about, you know, so all our traditions speak about desire, craving, you know, being the problems. But including me, when I see a new object in the mall, I will buy it. I just do it, you know. So how may we create communities that live in the manner, apart from all of you Munis are shining examples, but we are in our layperson's life, we are, you know, living as ordinary human beings, but still we can reflect on these values. And how do we bring about that awareness? Do I really need this? Should I buy it? How do I, you know, reflect on these? So I'm saying that इस इनका जो आचरण करना है, इसके ऊपर हमारे तरफ से बहुत interest है, to, because when we make it living principles, you know, that is when we will really bring about a transformation in society. And again, like after last time, Jain sir and I will reflect on how we may create connectivity with students for some of these dialogues to continue. कि ये हमारे जो meetings हैं यहाँ तक
हमको इनमें जो आइडियाज आ रहे हैं वो इनका हम how do we create it as a sort of a device for discussion, for channeling energies of students, and for actively bringing about a positive change on the ground. So that was just my sort of brief idea about some of the things that were discussed today. And Dr. Bhandari's app is just, I mean, it's, I will be the first one to download it. I want to know when it comes, Dr. Bhandari. I think it's a brilliant idea. So thank you so much. Thank you. One suggestion I will submit to Dr. Supriya. Because Somaya Institute of Dharma Studies is there. Academic program is going on well always. Yes. But there is some small cell within the V.C Somaya Institute from the point of view application of Dharma studies in our day-to-day life. Especially in the context of Somaya University, the students there are, the teachers are there and all that. So whatever we are discussing here, and some small programs, some small things, they can through that cell, which can have a fortnightly meeting or some program like this, in which all of us can share with the students and get their views also. And then this way we can make it more popular. And once it will become popular, then it will become a culture of the university. Absolutely. And some famous and well known for such a development in academic field, in the field of, in the life of students. So I think let us work over it and plan it over it. And I think the Rajshekaran Pillai, Professor Sahab, will always help us and guide us in evolving such devices in such cells. And let us see, within 1 year, if we can 20 such programs related with actual life. Correct. And then we can have the views of the students also and actual practical ways and applications there. I think it will be a better way of what we have put as an idea, we can translate it in action. That's what my submission is. Munishri, with your support and with your guidance, I'm sure we would, start these kinds of things in motion. And I'm reminded today of Dr. Shantilal Somaya. His, his view was always this. और कभी-कभी हम लोगों को डांट भी पड़ती थी कि आप लोग वहां बैठ के बड़े टेक्स्ट्स वगैरह पढ़ते हो, लेकिन उसका आचरण to all my students don't want to read your text. उनमें जो ज्ञान है वो अलग तरीके से आपको बांटने की सोच वो लानी चाहिए. So and young students they may not want to read big texts, so they don't, they want to lead a young life, which is fine. That is also to be done. That life has to be led, but in that we can create, like you said, Munishri, we will certainly think about this and plan out how we can start introducing this on our campus. Thank you so much. I think Samirji Somaya also means life. Very much. So his mind also, Correct. Yeah. So let us apply and go to the way. Okay. Zarur. End of the session, after enlightening views and executive thoughts by Dr. Supriya Rai, we would like to conclude this session with an audience feedback. If anyone among the audience would like to share his views or curiosity or questions, and they can raise their hand. The digital hand raise will work. Anyone? Now yes, they can raise their hands. It can work. It is allowed, and also unmute themselves and speak. Maybe if they are not, Dr. Narendra Bhandari is here. Or Vimalji Kothari. Yes, Vimalji Kothari. आज्ञा करिए. आपका कोई रिएक्शन हो, सजेशन हो? ऑन कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया. हाँ, आप बोलिएगा. ऐसा है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है. हाँ.
और इससे मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूँ कि लाभान्वित होंगे, क्योंकि अभी कोरोना के कारण 2 साल से घर में ही बंद हूँ और इसमें कई प्रकार के मन में विचार आते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है। जिंदगी में बहुत सी आशाएं और सपने थे, उनमें से क्या काम कर लिया है और क्या नहीं किया है। तो जो काम अच्छे दिखते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी करने की प्रेरणा भी मिली है। तो आप सबको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन। धन्यवाद। नहीं विमल जी, आपने जो बात बताई सही है, और आप जिस रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से 2016 से जुड़े हुए हैं, और जैसे अभी बहुत यंग स्कॉलर्स चाहते हैं कि हमें रिसर्च के लिए रिसोर्सेज मिले, तो हम इस फील्ड में अच्छा रिसर्च करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपका जो स्वप्न है कि हम सब मिल करके इस दिशा में आगे बढ़ें, तो हमारे अशोक जी कोठारी और आप सब लोग सोचेंगे कि इसको हम धीरे धीरे रिसोर्सेज को भी जोड़ें, और जेएएस वाले तैयार हैं कि रिसोर्सेज मिलने पर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जरूर विमल जी कोठारी, आपका जो ये अवदान है, सहयोग है, बहुत महत्वपूर्ण है, और हम आगे इसमें और चिंतन पूर्वक आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू वेरी मच सर। 1 मिनट में और बोलना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही मैं रतलाम वाले जो चेतन कुमार जी कश्यप थे, उससे यहाँ मिला था और अपनी इस कार्यक्रम के बारे में, यानी जैन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट और STRF दोनों के बारे में बताया, और वो काफी प्रसन्न हुए कि हम इस प्रकार का भी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने उनसे बोला है कि इसमें वो किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। उनका जो पुत्र सिद्धार्थ है कश्यप है, आपको नाम शायद पता है कि नहीं है, उसको उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि इस बारे में सोचे और वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन से किस प्रकार अधिकाधिक सहयोग कर सकते हैं, इसकी भी आज्ञा दी है उन्होंने। बहुत अच्छा है ये। चेतन कश्यप पहले भी बहुत जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ जी भी जुड़ेंगे, पता है। ऐसे लोगों को जोड़ करके हम एक बहुत अच्छी दिशा में जो यंगस्टर्स है उनका उत्साह बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत अच्छा, वंदन। बहुत अच्छा। हाँ, इसी क्रम में महेंद्र जी सिंघवी या ज्योति जी बोलिया, they want to reflect on। तो अभी समय की संपन्नता है और आज के सेशन में we were able to listen all the enlightening views from various versatile scholars, scientists here। और इस प्रोग्रामिंग के साथ हम अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग के साथ अपने इमोशंस का प्रमोशन करते रहे। इमोशन रिएक्शन के रूप में रहकर रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म में कैसे हम जुड़ सकते हैं, इसमें इनफैक्ट हमें वर्क करना है। जैसे आपने डॉक्टर नरेंद्र भंडारी ने प्रेजेंट किया वायलेंस काउंटर, वैसे अपने इमोशंस को भी हम काउंट डाउन कर सके और देख सके रोज रात को सोने से पहले अपने इमोशंस को एक वैल्यू नंबर दे सके आउट ऑफ 10। How I feel about my emotional reflections, I am being emotional or I am giving my emotions। एक इमोशंस वर्ड है, इमोशनल है। इमोशनल होना जहाँ प्रॉब्लम है, इमोशन होना हमारी एक विशेषता है। उस इमोशंस को हम कैसे बेस्ट वे में ड्राइव कर सकते हैं और राइट एसोसिएशन के साथ हर चीज में ब्राइटर पर्सपेक्टिव को लाकर अपने इमोशंस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो रोज रात को सोने से पहले हम एटलीस्ट रिफ्लेक्ट करें एंड आउट ऑफ 10 वी शुड नंबर आवर इमोशंस। आज अगर मुझे गुस्सा आया तो मेरा -2 है, अगर मुझे ग्रीड फैक्टर बहुत ड्राइव कर रहा है तो मेरा -1 है, अगर मैं दूसरों को कंप्लेन में टॉर्चर कर रहा हूँ तो मेरा -3 है, अगर मैंने किसी को स्क्रैच किया है तो किसी को पत्थर फेंका है या गाली बोली है तो -4 है। इस तरह का हम, और जहाँ पर कठिन परिस्थिति में हमने संभाव रखा है तो उसको +2 है। इस तरह से अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम के साथ हम आउट ऑफ 10 अपने आप को नंबर दे पाए और 5+ में रहने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए जो आज का जो डिस्कशन है वो एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के रूप में भी आगे जाएगा। इसी के साथ मेरा अनुरोध यूनिवर्स से कि मुनिश्री मंगल पाठ के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न कर सके। अभी ये फरवरी का हमारा ये दूसरा सेशन संपन्न हो रहा है। मार्च के सेशन के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं
प्रोफेसर सेंसिटी, प्रोफेसर पिल्लाई और सब लोग मिल करके सोचेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो हमें आशा है इसी प्रकार इस मासिक संगोष्ठी और सेमिनार के द्वारा हम आगे से आगे इस विषय में बढ़ करके और मानव सेवा के लिए हम अपने आप को समर्पित करते रहेंगे। इसी भावना के साथ मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंगतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अनंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पंगतो नमो लोकोत्तम चत्तारि शरणं भवन्जामि अनन्ते शरणं भवन्जामि सिद्धे शरणं भवन्जामि साहू शरणं भवन्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवन्जामि चारों शरणा सदा और सदा नहीं कोई ये भव पुराणी आगे अक्षय अमर ओम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद। जय आओ Mahendra Bhandari sir. This way Vapi. डॉक्टर जसवंत शाह फ्रॉम वापी और इतनी एज अभी 90 हो गए हैं फिर भी एकदम एक्टिव रहते हैं। Mahendra Bhandari. हाँ So it's the completion of this session today. Thank you, everybody. Munishri, thank you so much. Mahendra Bhandari Maharaj. बनवानी साता आपके स्वास्थ्य की हाँ